pagination, what is the pagination, how it is visible on website. So let's see. See, आई एम टॉकिंग अबाउट दैट, लाइक जैसे आप कोई एप्लीकेशन देखते हो तो उसमें आपको इस टाइप से एक यूआई दिखता है पेज का, राइट? तो आप उसको continue करके you can switch on the next page and you can see this lots of data and you can maintain your visibility of your database, right? So that mean it's totally based on how your database can comes on the front page, right? So that is called, that's kind of pagination. So we are just simply adding the same functionality on our real life example application that I am showing you later, right? So I hope यहाँ पर कोई कंफ्यूजन रहा नहीं होगा किसी को कि मैं एक्चुअली क्या बताने जा रहा हूँ, ठीक है? सो पैजिनेशन हम लोग बहुत तरीके से यूज कर सकते हैं, बहुत डिफरेंट डिफरेंट जेम्स आते हैं. जेम्स क्या होता है? जेम्स काइंड ऑफ, यू कैन से इट्स अ पैकेज ऑफ code that we are using for a specific functionality. Here we are using pagination. So pagination have so many gems like Kaminari gem, will paginate, PG. Okay, so many gems we can use for that type of issue and we can resolve it. So major single line, if I'm talking about the definition, simple you have to, if you want to handle the lots of data on your single page, so you can use the pagination solution also, right? So let's we implement this specific requirement. Like I have to create a specific application for that. So let's go to the specific folder if when you want to store your application. Now you can create your real life application with the help of scaffolding. Okay, I'm also using here scaffolding. If you want to know about the scaffolding, so simply scaffolding is just kind of a technique, a magic tool when you can generate a specific card method, simple structure of method randomly on the requirement of your schema. Like if I want to create a post model or post controller or post view, so just same three thing we can create in a single line with the help of scaffold and it's generate randomly, right? So we can create the application with the help of scaffolding. The scaffolding just simple सा एक टेक्निक है जिससे आप एक सिंपल कर्ड जो एक्शंस हैं, जो रिक्वायरमेंट्स हैं, वो आप एक सिंगल लाइन ऑफ कोड से क्रिएट कर सकते हैं, राइट? अब यहाँ पर अगर मैं एक एप्लीकेशन क्रिएट करता हूँ लाइक Reels new post pagination, right? Okay. CD. सो ये हमारा एक एप्लीकेशन क्रिएट हो गया, ठीक है? इसके बाद मैं एप्लीकेशन के अंदर एंटर करता हूँ. हमारा एप्लीकेशन का नाम क्या था? व्हाट इज द नेम ऑफ एप्लीकेशन? पोस्ट पेजिनेशन. आई एम एंटर इन माय एप्लीकेशन आल्सो. आई एम यूजिंग सबलाइन शॉर्टकट. So here the subline was not working. I think there is an issue. Single dot. No. Okay. So
it's working fine. Now post pagination is working fine, right? So we are land on our application. So we have application. There we don't have any kind of right now we don't have like any controller, any view, any model at that time, right? So I'm just for the explanation of pagination and for the faster viewer, I'm using the scaffolding here, right? So for that we can use here, and I'm guess you all aware about the scaffold here. So no need to explanation regarding that thing. If you have any issue regarding that, you can connect with me also later. Okay, and body should be text. So we have to mention your text, and title should be by default string. Okay, it's creating it. Now I just need only hit a single button, press TB. Okay, and if I want to go to the server screen, so I need to start the server also. Okay, the server is started here, and I'm going to the specific local admin page, local URL. The model name is post, right? So it's a kind of simple, हमको एक व्यू पेज मिल गया है जिसमें हम लोग हमारा एक पोस्ट क्रिएट कर सकते हैं। लाइक मैं पोस्ट क्रिएट कर सकता हूँ लाइक टास्क क्राफ्ट। ओके, सिंपल इट्स ये एक पूरा आपका एमवीसी स्ट्रक्चर जो सिंपल कर्ड मेथड पे बेस्ड है वो हमने बना दिया, राइट? यहाँ पर आपका पोस्ट शो हो जाएगा, और आप इस पे पेजिनेशन कैसे लगा सकते हो हम लोग इस पे बात करते हैं, राइट? तो हमारे पास में दो ऑप्शन है, या तो हम लोग कामिनारी का यूज कर सकते हैं या फिर हम लोग विल पेजिनेट का यूज कर सकते हैं। जनरली हम लोग विल पेजिनेट का यूज करते हैं, और बहुत सारे लोग कामिनारी का यूज करते हैं। दोनों में एक डिफरेंट बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे, मैं बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे कि विच वन इज बेटर। ओके, सो फर्स्ट आई वांट टू एक्सप्लेन यू विच विल पेजिनेट। अब यहाँ पर विल पेजिनेट के लिए जनरली ये एक जेम है क्या? पहली बात तो मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। द जेम इज दैट अ काइंड ऑफ पैकेजेस कोड, यू कैन ऑल्सो दैट द बॉयलर codes that generated simultaneously, that is also developed by the other person, and we can use only simply. Okay, it's not developed by us, so it's kind of simple package of codes that we are using on our application simply. Okay, so will paginate is kind of gem also, so we just install gem here in our application side. We have to go first gem file. Okay, so you know about that gem file. Where is gem file? So gem files comes in, and just we have to go to the end of the file and implement this application required gem. Okay, so the gmail paginate is integrated from our side. This we need, what we have to mm, implement. The second step is that we have to run the bundle. You know very well, we have to run always a bundle command uh, when we integrate a new or implement a new gem in our gem file, right? So we have to just run the command here, bundle, install bundle, whatever you can use here. So we just I'm using bundle here.
and definitely my bundle is completed. The 15 file gem file is dependency is covered here. 75 gems are installed. Okay. Now I just need to follow the document also. And we can also observe the whole documentation here will paginate, which one we have to use, which one we should ignore for now. Okay. Just you need to understand what the basic will pagination use. Okay. So यहाँ पे आप अगर देखा जाए तो आप जब पेजिनेशन की बात अगर मैं कर रहा हूँ यहाँ पे तो फर्स्ट पेज सेकंड पेज थर्ड पेज टेस्ट टेस्ट इस टाइप का यूए अगर नो चाहिए तो हमारे पास कम से कम 10 या 5 या 15 या 20 स्टोरेज क्रिएटेड रिकॉर्ड्स होने चाहिए, राइट? तो यहाँ पर हमारे पास डिपेंडेंसीज हम मेथड से क्लियर कर सकते हैं कि हमें कितने पर पेज पे चाहिए, कितने ऑब्जेक्ट्स, कितने इंस्टांस हमको एक सिंगल पेज पे चाहिए, तो हम वो डिसाइड कर सकते हैं, राइट? तो यहाँ फॉर द पोस्ट मॉडल, पहले मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। पोस्ट मॉडल पे हम लोग बहुत जगह सेल्फ डॉट पर पेज करके हम लोग ये यूज करते हैं, या फिर विल पेजनेट पर पेज डॉट 10 करके, यानी कि अगर हम किसी भी एक मॉडल, जैसे मैं अगर मैं इसको मॉडल लगा देता हूँ, पोस्ट मॉडल लगा देता हूँ सेल्फ डॉट पर पेज करके, तो ये इसी मॉडल के लिए इसके जो जो इंस्टांस होंगे, जो ऑब्जेक्ट्स होंगे, वो पर पेज पे 10 दिखेंगे, सिर्फ सिंगल इसके लिए, इस मॉडल के लिए। वहीं अगर विल पेजनेट की बात करूं तो विल पेजनेट इज वर्किंग फॉर होल ग्लोबली, यानी कि यहाँ पे ईच एंड एवरी मॉडल शुड बी वर्क अकॉर्डिंग टू दैट default setting, right? So we can easily mention on that type. And meanwhile, just we have to use that line. We can use also that one, but just I want to use the explicitly per page limit. हमें यहाँ पर इसके लिए क्या करना नहीं पड़ेगा, हमको स्पेसिफिकली मॉडल में जाकर के इसको सेट नहीं करना पड़ेगा। जो पर पेज वाली सेटिंग है, हमको उसको एक्सप्लिसिटली यूज सेट नहीं करना पड़ेगा मॉडल के अंदर। सो व्हाट वी कैन डू हियर, जस्ट सिंपली कॉपी दिस line and you can simply use in your subline controller. So once again, a question is that this is our controller, this is our model where we can find our post model also, and this is our view page where we can find our post related HTML files also, right? So that is comes from scaffolding. Just we need to go simply an index API, index action, okay, that we can also call it's a listing action, okay. So you need only comment this one and paste this one. You can use this one also, right? And just okay, that there is so many data, so we can for the explanation, just I want to per page the 5 instance on a single page. So that's why I'm setting the five items on a per page, right? And after that, what should I have to do? I have to go in a view side and switch to index.html.erb file. Okay, remember this file also. Okay, and if I'm talking about the document, just definitely you have to go on your html.erb file and you can copy this one also. Simply you just copy this line for rendering the page links. If I'm adding this line in our html.erb file, that is belongs to index, okay, so just need to copy that side, okay. But thing is that the data is not coming here in a listing form. You can see if I'm see undefined will paginate post here. So what we can do regarding that, just need to implement listing files here. Okay.
You just need to copy this file, the listing for the listing table. Sometimes a version is not supported here. That could be issue facing by you. So it could be possible, it could be not. It based on your version. So simply just it's the simple requirement here. Okay, just go to their post indexing page. See, so here we have only I think single data. So just we need to create some more data also. Like where I already I am not save this file also, so I have to save this file and just need to create five more data here for implementing pagination here. So just let's create a data also. Okay, so anyone explain me why it's happening here, pageant, why that thing is happening here? Anyone who work on pagination here? Sandesh, Tanish, anyone? Sir, can you please try server off and on? Yes, definitely. That could be the issue, and definitely after any gem, you have to restart your server. Yes. See, now I have to create. So always remember those things. Like when you install any gem on your application side at your file, so you have to just restart your server again, and after that you need to change on your code side. And like so many person just facing the error and then implement in your code side. Just you need to check your server also. Okay, that's why I'm creating that thing. I need to create five more data here. So I can also use the faker gem. I can explain later also, but you need to just create a five data here. So it's simply just like I'm create a simple like test and explanation. Anything I can create here is for the five post. Okay. Tarish, your bike is sold here. Okay. Now belongs to a kind of tea break. 4 to 5 o'clock. Anything I can write here and create my five posts for implementation just simply.
Test TVS again. Sport. TVS Sports. Yeah, I can. TVS Sports. Sold. Okay, so we have a five post, right? And after five post, the pagination working here, I can imagine like that. Let's see. Okay, just I am creating a one more. I'm not using any validation. That's why I'm creating a like simultaneously a same database here. Okay, simple thing. So back to the, you can see, you just, you can see here pagination is implemented here, right? If I can see here only five data, five instance on a single page. If I want to see next data also on a single page, just the sixth one is coming on the next page. So that's a pagination. So we can use this will paginate gem in a ROR, in a real life application. For this issue resolution, अरे मेरा सिस्टम स्टक हो रहा है यार. see, for the will paginate, you just need to this gem, and you just need to first of all, we can just revise the session here also. For the will paginate, just you need to replace the lines here requirement and the visual requirement. Just force paginate and page params page and per page is like that. So that is a very good line for the using here. If you want to custom your validation on your model side, so you can use this line also on your model side, and you no need to mention here per page on that line. Simply that the reason is why I'm using that line here. Okay, but it's totally depend on the requirement. It should be customizable from the database, so it should be customizable from the user end. Okay, simply. If I'm talking about the Kaminari, yeah. If I'm talking about the Kaminari, so Kaminari also kind of pagination gem. Okay, so for that requirement, just you need only a simple what we can say, this line also here, that is same as pagination. See, at your modal end, we are using here self dot per page is equal to 10 in a will paginate. And if you implement the Kaminari, you just need to per paginate per 50, 20, 12, whatever you can implement at your end, at your choice. The difference and similarity I'm showing you. And you can also set your maximum requirement on a single page at Kaminari site, like 100. That maximum page rate per is 100. So it's a fixed. Okay. So meanwhile, if I'm talking about this line, just two line is there. Just no need to explain whole the thing you have to from your side. Just simply you can use at your end for will paginate the single line this one. If you are using Kaminari, just you need to use this one. Simple. At your index or action listed. Okay, so that's the simply requirement. And one more thing, at the requirement of will paginate where we are reading, कहाँ पे हम लोगों ने इसको ऐड किया था, index.html.trb में, राइट? मैं आपको बता दूं एक बार, तो यहाँ पे हम लोगों ने इसको ऐड किया था। तो ये आपका ये क्या करता है, ठीक है, ये करता है कि ये इनबिल्ट जैम है, तो डेफिनेटली विल पेजिनेट एक मेथड है इनबिल्ट इस जैम के अकॉर्डिंग।
जो कि एक लिंक क्रिएट कर देता है डेटाबेस के साथ में। इंस्टांस को लिंक वाइज जो है वो आप फैच कर सकते हो, राइट। आप सिंगल पे फैच करोगे तो 10 डेटा फैच करके लेके आ जाएगा वो एक्टिव रिकॉर्ड से। सेकंड पे क्लिक करते हो तो आपका फिर वापस आपका 10 इंस्टांस पेज करके लेके आ जाएगा। तो विल पेजिनेट लिंक क्रिएट करता है। सिंपली यहाँ पे आपको मेंशन भी है, तो इसमें कुछ स्पेसिफिक है नहीं, रेंडर पेज लिंक इन द व्यू। बट वही अगर कामिनारी यूज कर रहे हो, कामिनारी में आपको विल पेजिनेट की जगह सिंपली पेजिनेट लिखना पड़ेगा। बाकी पूरा सेम है, बाकी आपको कुछ नहीं करना है इसमें, यानी स्पेसिफिक कोई रिक्वायरमेंट इसमें नहीं है। ठीक है, तो तीन चीजें हमने यहाँ पे देखी मेजरली। अगर मैं बात करूँ आपसे, तो आपको सबसे पहले जेम इंस्टॉल करना पड़ेगा, फिर आपको बंडल रन करना पड़ेगा, फिर आपको उसका जो भी लिस्ट ऑफ डेटा एक्शन है, जो एपीआई है, उसमें आपको सिंगल लाइन ऐड करना पड़ेगा रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। और उसी को अगर आपको व्यू करना है तो विल पेजिनेट करके आपको index.html.erb में ये लिंक ऐड करना पड़ेगा सिंपली। अगर यही एपीआई बेस पे है तो आपको विल पेजिनेट ऐड करने की जरूरत नहीं रहेगी। वो अपने आप ही उसका जो भी रिक्वायरमेंट है परम से फैच करके आपका रेंडर कर देगा आपके जेसन फॉर्मेट में। जिसने इस पे काम किया होगा वो जानता है इसको कैसे काम करता है। सिंपली व्यू पॉइंट ऑफ व्यू से अगर यूज करना है तो विल पेजिनेट लिंक आपको यूज करना पड़ेगा। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो बहुत लोगों ने विल पेजिनेशन का यूज किया है, तो मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि यहाँ पर मुझे बताओ कि पेजिनेट जो है वो मेथड करता क्या है। कोई बताएगा मुझे? प्रदीप कुशवाहा, या यू कैन। No, sir. I am asking, sir, why we are using self dot per page. सेल्फ डॉट पर पेज जनरली हम लोग मॉडल के लिए कस्टमाइज करने के लिए, जब भी मॉडल पे मैंने सेट कर दिया कि मुझे इस मॉडल से पोस्ट मॉडल है, पोस्ट मॉडल मुझे 5 पेज ही चाहिए, तो मैं वहां पे सेल्फ करके यूज कर लूंगा। ठीक है, और अगर मैं चाहूँ तो उसको सिंपली जो एक्शन मेरा इंडेक्स एक्शन है उस पे जाकर के भी मैं उसको